Hello and good morning, everyone. Online students, welcome to you guys as well. I hope I'm audible. अगर मेरी आवाज आ रही है, can one of you just write in the comment box? Yes. All right. Thank you, Ankita. Right. So, uh, this is only the orientation lecture for our Sunday Live program. The agenda today is going to be to familiarize you with the course, give some insights into the subject, how we are going to approach it, what will be some of the basics in answer writing that you should start imbibing from the very beginning, and what are some, you can say, kind of commandments to be kept in mind as a general rule for overall history preparation. Right. So our class today is going to be focusing on these aspects. Now, after I'm done speaking, I'm done delivering my part, I'll throw the floor open to your queries as well. This includes online students also. I'm asking the technical team to allow you to unmute yourself and ask your questions. I have you guys in my ear, so I'll be able to hear you guys, but don't unmute yourself and ask questions unnecessarily, because for the time being na, you are muted on in my ears, so I won't be able to hear you. You will be unnecessarily disturbing your peers. जब मैं बोलूँ ना कि हाँ कोई questions हैं, you can ask me then. ठीक है, चलिए शुरू करें. Right. So first, I want to give you some insights into the basics of history optional paper and answer writing. So I'm sure most of you guys must know what the paper consists of, what the syllabus is, how many parts the syllabus parts the syllabus is divided into, how does the paper appear, etc. So you have two papers, right? That you have to write, paper 1 and paper 2. Paper 1 is going to cover ancient and medieval India. Paper 2, modern India and world history, right? In the examination hall, your paper is also going to be divided into two sections. Both paper 1 and paper 2 are going to have two sections each. Sections A and B. There are a total of 8 questions, out of which you are required to attempt 5. 1 and 5. These are going to be compulsory questions, right? With regards to paper 1, the first question is mapping. So mapping module is included with your syllabus, with this course. You can collect the mapping book from here, and mapping videos are available on your portal as we speak, right? तो इसका स्ट्रैटेजी वगैरह सबसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. रेस्ट एवरीथिंग यू कैन कम टू मी. ठीक है. अच्छा, पेपर 1 में द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ 5 पार्ट क्वेश्चन, 5 into 10 marks each. So both these questions are going to be compulsory. Paper 2 mein, both questions 1 and 5 are going to be 5 part 10 marker questions each. Then numbers 2, 3, 4, 6, 7 and 8. Out of these, you have to attempt 3 questions, right? But वहां पे भी एक चीज है, that you have to attempt at least one question from one of the remaining questions from each section. It cannot be that you attempt 2, 3 and 4 because you are well prepared in ancient India and leave the rest of the questions. So at least one from here, and then one of your own choice. So it may look like this: number 3, number 6, number 8, or any combination thereof. इतना समझ में आ गया है ना? Now, second, coming to the difference between answer writing and test writing or test practice.
तो बताइए, एनी थॉट्स यू गाइस हैव कि एट अ थियोरेटिकल लेवल सेम है या अलग अलग चीजें हैं ये? कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, देखो, इन ऑर्डर टू क्रिकेट का एनालॉजी लेते हैं। आई एम श्योर एवरीबडी वॉचेस क्रिकेट और एटलीस्ट नोज अबाउट क्रिकेट और एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर, राइट? तो क्रिकेट में कई सारी तरह की स्किल्स चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ बैट्समैन, you want to work on how to hold the bat, how to move your leg just before the ball pitches, or where how you should position your head, right? Will the best time be to practice all these things while the test match is going on, or will this be done in the nets? In the nets. So that exactly is what answer writing is going to involve. Okay? It is going to be a daily exercise. The objective over here is qualitative improvement. ठीक है? Uh, what are the things that you will be looking to improve upon qualitatively speaking? First of all, for writing any answer, na, the first thing that you must do is to be able to decode the question, understand the exact demand of the question. Only then will you have the correct direction in which to proceed. Without that, your answer may become directionless. You may have all the relevant content, but since you have not appreciated the exact demand, your efforts are going to be wastefully expended, right? So you want to attack the question in the most effective manner. So first thing is going to be to decode the question, right? Now, once you have understood the exact demand of the question and you know that you have all the relevant content, how to selectively use that content, because by the time you are in the final stages of your preparation, the problem will not be that you do not have sufficient content. Rather, problem will be that you have too much content, what to pick, what to leave out. So that is going to be right. So identifying relevant content, that is going to be another aspect of qualitative improvement. Thirdly, once you have identified the relevant content, you must also be able to logically arrange it in your mind before you actually start putting your thoughts on paper, because there is a particular order of priority to all the arguments that you want to make. The objective of your answer writing practice or any test is to fulfill the demand of the question. The question poses a problem, you need to provide a solution. For that, there should be a logical flow to your answer. Okay? For that, prioritization or putting all the arguments in correct order, that is also going to be of vital importance. Okay? Further, each question is going to be unique. Yes, there may be a possibility that from the same theme or the same topic or the same subtopic even, more than one question may appear. But the way in which the wording of the question has been framed means that the demand of those questions is different. So although you may be required to use the same content for writing both answers, the way in which you are going to place those, that is going to be quite different. So here comes the importance of structuring the answer. ठीक है कि if your answer is divided, let us say, into three segments, which of these should logically come first? Within that, which order should you follow for enumerating the points or arguments? What you should mention first, what you should mention later. Now, this cannot be a live exercise. You should have the framework in your mind before you actually start writing, right? But that is going to take a little bit of time. Therefore, this is going to be a daily exercise on your behalf. Clear hai? अच्छा, then introduction,
and conclusion. Now, uh, introduction and conclusion, although I can tell you about the theory, the different types of introduction and conclusions that may be possible, but since throughout our Sunday Live program, our main exercise is going to be to work upon these aspects, this is something that is best demonstrated, not taught. Okay? So just keep an open mind. I will be requiring you to think actively along with me in the classroom. I will be providing model answers, but we are not going to excessively rely upon that for the structuring and theorization part. Yes, relevant content you can pick from there, but I want you to prepare your own model answers. I want you to develop your own unique way of thinking, right? Of theorizing. So for that, this is also important. And lastly, probably the most important but most neglected portion, that is presentation. Okay? Now, are you familiar with the number of people who appear in the examination or who apply for the civil service examination every year? कितने applications आते हैं? 10 लाख के around लोग apply करते हैं. Ultimately, about 5 lakh people end up appearing in the prelims examination. Of those, roughly 13 to 14,000, depending on the number of vacancies, they are actually writing the mains. Apart from the 2 language papers, कितने papers लिखने होते हैं total मिला करके? 7 other papers, right? तो 4 GS papers, 2 ऑप्शनल के पेपर एंड एक ऐसे वाला पेपर, तो 7 पेपर्स टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं. तो 13,000 इंटू 7 कितना हुआ? 91,000 हो गया, राइट? अब यूपीएससी मेंस को कंडक्ट करवाने के बीच का और मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बीच का व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन? रफली 2 months, 60 days रहता है, राइट? तो 90,000 copies in 60 days. On average, that comes to 1,500 copies per day, right? Now, even if the UPSC employs 100 individual or 100 examiners, so that gives what? 15 copies per examiner. डबल भी कर लीजिए तो भी वो 7 8 copies per examiner per day होता है. That means if we are saying that one examiner is working for, let us say, 8 hours every day, because that also requires a lot of input now from their side. So they don't have more than half an hour to 45 minutes per copy if they are not taking any breaks in between, right? You are writing 20 odd questions in every paper. So what is going to be the qualitative difference between a well prepared student, a well prepared candidate who has been practicing answer writing and who has not been practicing answer writing? The difference is not going to be very large, it is going to be marginal at best. What actually will make the difference is that the people who have worked on answer writing skills, who have worked on consistently improving their presentation, that is going to be the real difference maker, right? So if you are able to minimize the workload of the examiner, if you are able to invite him to actively go through your answer copy, to look at all the important arguments that you have made, all the evidence that you have suggested, then they are going to reward you marks. On the other hand, if you make the examiner work more, then they are probably not going to be very interested in rewarding you marks. Okay? So this is probably one of the most significant portions. So often it is neglected, but it should not be. Clear hai? Achha. Test writing, on the other hand, what is the objective over here? यहाँ पे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे क्या होगा? क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव, उसके अलावा कुछ और? इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन वहां पर होगा. ठीक है? द स्किल्स दैट यू हैव अक्वायर्ड थ्रू योर डेली हार्ड वर्क, you will be displaying that on the big stage. That is one thing. But test writing also, it you can do it as a practice. Now we are also going to have a number of tests, 4 tests included, right? So what is the objective over here? Is it to polish your answer writing skills or is it something else? It is something else. Kya? To build your endurance, first of all, right? Now imagine yourself, you have
probably been working on answer writing for 2 months by this stage. So you are comfortably able to write one answer in about 9 or 10 marks or 9 or 10 minutes on average, right? That should be your final objective. But think about a stage in which you have to repeat that same process without any break 20 times again in the same sitting, right? Over 3 hours. So that becomes a very tiring exercise in itself. Your mind also starts tiring, your thoughts start becoming cluttered, body also starts getting tired. So you need to build that endurance not only to be able to sit but actively think for 3 hours so that your hand does not tire, etc. So that is one thing. Okay. Second, it is going to be strategizing, right? So yesterday, I believe it was only yesterday, na Shangri-La dialogue के लिए the CDS had traveled to Singapore and General Chauhan, and वहाँ पे एक interview उन्होंने दिया, right? And there he said that we made a tactical error on the first day, then we corrected our tactics, and then we outperformed the opponent, the enemy, on the next 2 days. So that is also what you need to do. So tests are going to reveal the chinks in your armor, the weaknesses in your preparation, right? And that can help you to improve upon those. So it is going to reveal not only the qualitative weaknesses, but at the preparation stage, if you have any conceptual gaps, those are also going to be exposed by these tests, right? So you can go back home and then work on improving those. It is also going to reveal to you your strengths as a writer of answers as well as a student of history. दोनों ही चीज, it tells you about your strengths and weaknesses. It also shows you a path going forward at what should be my strategy to further improve my performance. Okay, that is the second thing. And third thing is time management. Right? So there is a general tendency that in the beginning of every month when you receive your salary, you live like kings, but by the end of the month when you are running out of everything, you start saving up. So that is, if you are had to draw an analogy with the civil services exam, so first 5 or 6 questions you are going to attempt very leisurely, right? Maybe out of the allotted 3 hours, you take 1 hour, 20 minutes, even 1 hour, 30 minutes. But for the remaining 14, 15 questions, you'll have to cram all of those in the remaining half period, right? In the second half. So in order to avoid that, it becomes very important that you have familiarized yourself that how you respond to the situation of appearing in an actual test. Is this clear? समझ में आया? तो strategize करना, endurance build करना, time management को सीखना, that is going to be the real objectives of test writing. And then obviously there is going to be a feedback mechanism how you can improve those things. So there is going to be guidance over there, but majority bulk of the learning you are going to be imbibing on your own, right? So since this is something you are going to be actively embedded in, so you are going to be your best teacher at this stage. Clear है इतना? अच्छा. So answer writing, should we be doing it in the final stages of our preparation, or should we be looking to do it from the very beginning? UPSC के mains examination में what is the basis on which marks are going to be awarded? On the quality of your answers, right? तो situation इसी तरह की है कि suppose you have to, after a month or so, you have to participate in a swimming competition. ठीक है? But for practice, you are going to the gym and running on the treadmill. Is that exercise going to be very useful? Yes, it can help build your stamina, it can help build your endurance, but until unless you actually do the work that is actually required, until unless you go to the pool, do your laps, so it is not going to be very helpful. Similarly, over here also, what usually happens is that students come with a preconceived notion that first I will acquire all my knowledge, then I'm going to process it, I'm going to prepare notes, I'm going to revise those notes. Out of the longer notes, I'll prepare shorter notes. And after all this is done,
then I'll start answer writing. But what have you been doing for all this period? Have you been actually preparing yourself for the civil services examination, or have you been preparing yourself to become a clerk? Right? Because you are taking summaries, notes, etc. So you are not preparing to become a collector, you are preparing actually to become a clerk at this stage. But here, since it involves a lot of active thinking, and it is a very sad reality that in our universities scene, we don't give much emphasis on active thinking, critical analysis, etc. This is an underdeveloped skill. So this is something that you have to start working on from the very basic level to reach to the top. ठीक है, तो ये हमको ऑन अ डेली बेसिस करना चाहिए. This, on the other hand, should it also be done daily? No, this should be done periodically. How to determine the periods? So your syllabus history optional has one advantage, that it is divided into 4 neat little compartments: ancient, medieval, modern, and world history. After you finish your ancient, do a sectional test. Medieval, sectional test. Modern, sectional test. World, sectional test. Then after that, it should be integrated with your revision schedule. So after the initial preparation, since we are actually doing the preparation quite comprehensively, therefore revision is not going to take all that much time. So you can expect, even if it takes 1.5 months to cover the entirety of ancient India, its revision you will be able to complete in a matter of 1 week to 10 days. ठीक है, उतना ही time लगेगा दोबारा revision करने के लिए. So as soon as you do that, right, another sectional test. By this point of time, you'll have covered a substantial portion of medieval India. Wait till you complete medieval India, write a sectional test, then a comprehensive test. That means a full length test, including both ancient as well as medieval India. So you will be giving yourself an opportunity to not only actively prepare, do your qualitative improvement on a daily basis, periodically revise and test yourself, test practice, but you will be doing this actively while revising your syllabus. So it is going to be one layer of memory over another layer of memory over another layer of memory over another layer of memory. Okay, so that is the strategy that we should be following. I hope this is clear. Online students, I hope this is clear, right? All right, thank you. Now, secondly, I want to talk about the utility of model answers. Now, in our Sunday Live program, for every question, I am going to be giving you model answers. Okay? So how should they best be utilized? Uh, Generally, there is a tendency for everybody, it exists anywhere in nature, to take the least path of least resistance. So with regards to our Sunday Live program, what is going to be the path of least resistance? Especially given the way in which we have been accustomed to acquire knowledge since childhood. बचपन से मार मार के रटाने की प्रैक्टिस करी गई है, राइट? तो अभी भी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज apparently the same, that हाँ मॉडल आंसर मिल रहे हैं. If I want to prepare a topic, I will ratify that, and if I want to prepare a question, I'll ratify the model answer. My job is done. But that is not the case, right? Because history, or in fact any humanities subject, is not a science, right? It is an art that wants to be a science. You are going to find theory, scientific concepts in history writing, etc. But that is an ambition, that is an aspiration to come up with a unified general theory of history. But do historians always agree with each other?
No, they do not agree with each other. And this subjectivity is also reflected in the responses to questions that are generated in history. The same thing is going to be present over here as well. Kya? Subjectivity. And while doing our reading, we are going to come across various schools of history, but you should also realize in a particular manner that is unique from everybody else. Okay? The types of impulses that you have gone through since childhood, the kind of experiences that you have had, the kind of contacts that you have built, the kind of relationships that you have developed, they all train your mind to think in slightly different manner than everyone else. What model answers and excessive reliance does is that it suppresses your natural instincts. It acts as a roadblock to your creative process. So model answers में मैं ये कोशिश करूंगा that you should be coming up with your own unique model answers rather than relying only upon the model answers that I provide, right? So the way in which you begin the answer, that may be completely different from the way in which I might want to begin the answer. मेरा personal preference है, मैं उस हिसाब से सिखाऊंगा आपको, बट कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी को गॉस्पेल ट्रूथ मान करके आगे चलो. There is going to be a lot of freedom, there is going to be a lot of exchange of ideas. And in fact, ये जो questions है ना, most of these are questions which we have already taught in one or the other of our previous batches, please. But हो क्या रहा है that every time I am going through those previous model answers, I am revising them as well. So that means if I'm ready to change my own mind about a particular thing, that means whatever I've included in the model answer, you cannot treat as gospel truth. There is always going to be room for improvement. ठीक है? So इसका सब्जेक्टिविटी होने का, फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी 3 or 4 choices to be made at every point in every answer, right? तो what does this actually mean? कि important क्या है for writing good answers? It is to understand the demand of the question and to use the tools and knowledge at your disposal to best address that demand, right? Now, everybody has their own unique style, everybody has their own presentation skills, everybody has their own level of communication skills. So all answers are not going to be created equal, but you can see that 5 different answers written by 5 different students using different types of arguments, different structure, different point of introduction, different note of conclusion, they can all fetch equal marks also, right? So there is no single correct way of answer writing, multiple correct ways. And that is why I suggest that you use model answers, but not for the structuring part, right? So one structure is going to be suggested in every answer since I've prepared it, but keep your mind open. Model answers should be used primarily for content and not structure. ठीक है? Online students, I hope this is clear to you guys as well. Yeah? All right. Thank you. Thank you. Right. Then, if you look at the previous year's questions and analyze them after having understood the nature of the subject, you are going to realize that the types of questions that the UPSC asks falls basically into 2 categories. Okay? One are the narrative type questions and the other are the analytical type questions. And
On average, in any year's paper, you will find the weightage is roughly equally divided. So 50% of the questions are going to be of narrative type, 50% of the questions are going to be of the analytical type. What is the difference between the two? What do you mean by narrative type questions? Questions which require a straightforward narrative. There is very little room for argument. Okay? So you may be asked to throw light on a particular phenomenon in history or a particular set of ideas. Nothing more, nothing less than that. तो यहाँ पे भी generally होता क्या है, किस तरह के questions आएंगे? Questions related to chronology and evolution. For example, you may be asked to throw light on the evolving normative position of Indian intellectuals with regards to social questions. For example, gender relations, caste relations, class based questions, views on the idea of dharma, etc. So you are going to progress logically from one period in the past to a later period in the past. Chronologically you are going to progress. For example, what was the normative position of Indian intellectuals or scholars with regards to varna during the early Vedic age? What changed during the later Vedic age? महाजनपद एज में क्या challenges आए? वो मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन एज, गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता एज. ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात हम अगर कर रहे हैं, इस तरह से प्रोग्रेस करेंगे. Or let us say if we are taking a question from modern India, so we may be asked to analyze the evolution of the concept of nationalism as it spread out of Europe or within Europe, right? So let us say from Western Europe concept of nationalism emerges, but in Western Europe, Britain, France में it corresponded with the Industrial Revolution, and it was also a byproduct of the ongoing political developments. So it was associated with liberalism, fraternity, right? Those kinds of things. Germany में क्या होगा? It is also associated with the Industrial Revolution, but instead of liberalizing the polity, it made the polity more top down, more autocratic, despotic. ईस्टर्न यूरोप एंड आउटसाइड यूरोप क्या होता है? Nationalism emerges as quite a destructive force, because by this point of time industrial revolution has started to mature, but all these places they were late to catch up to it, right? And therefore a number of counter revolutions and revolutions are going to clash with each other. The nationalist ideology is going to clash against other ideologies such as imperialism or communism, right? पैन अरबिज्म का कॉन्सेप्ट क्लैश करेगा ऑटोमन एम्पायर के साथ, पैन स्लाविज्म का कॉन्सेप्ट क्लैश करेगा ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड रशियन एम्पायर के साथ. तो दैट इज गोइंग टू बी अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. Then if you come to Asia, it is once again going to be associated with what? With liberalism, with democracy. But once again destructive aspect भी होगा कि decolonization, breakup of empires, it is going to be associated with phenomena such as world wars as well. तो इस तरह की चीजें, मतलब we have to identify the trends over here, but there is very little room for argumentation over here. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. नाउ कमिंग टू दी analytical type portions. So questions may be with regards to different perspectives or historiography, right? Meaning that there is lack of historical consensus about a particular historical phenomenon. इसको बोलते हैं हिस्ट्री में डिबेट. ठीक है, योर हिस्ट्री सिलेबस इज लिटर्ड विद अ नंबर ऑफ डिबेट्स. हम जब ये संडे लाइफ खत्म हो जाएगा उसके बाद एक हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर अलग से डेडिकेटेड मॉड्यूल भी लाने वाले हैं. दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन संडे लाइफ, बट इट इज आल्सो गोइंग टू बी एम्बेडेड वेरी मच इन द एक्टिव पोर्शन ऑफ योर संडे लाइफ प्रोसेस, बिकॉज विदाउट डिबेट्स हिस्ट्री अधूरी रह जाता है, राइट? तो ये पर्सपेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस हैं. For example, let me give you an example that हाँ कि Harappan civilization, everybody knows about this.
what can you tell me about the origin of the Harappan civilization? कुछ तो पढ़ा होगा. What were the factors responsible for the emergence of the Harappan civilization? Was the Harappan civilization created by the people native to India, or was it created by outsiders? Was it Aryans who came to India and created the Harappan civilization or not? These are different historical positions or theories or hypotheses that have been postulated by different schools of historians. There is lack of consensus between them. So a dialogue has taken place between scholars. तो ऐसा नहीं है कि simultaneously dialogue हो रहा है. One writer may write something, others may support him. Then a new type of thinking emerges, new techniques are developed, some interdisciplinary learning is also taking place. So some pedagogical tools or investigative tools from other humanities subjects may be incorporated by historians, and they may also be applied to these questions, right? So a new understanding develops. Then a later generation is going to challenge both the previous generations. They are going to suggest their own things over here, right? So Aryan invasion theory or Aryan origin theory, foreign origin theory, indigenous origin theory, these types of questions may be asked as well. Okay? Then a very important portion is going to be causation, right? So have you ever stared at the night sky? दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, तो पोल्यूशन इतना है, कुछ दिखता नहीं है, बट इन द नाइट स्काई एटलीस्ट मूवीज में क्या दिखता है? पूरा तारामंडल दिखता है, द एंटायर गैलेक्सी, एवरीथिंग, राइट? एंड व्हाट आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? अलग अलग पॉइंट्स ऑफ लाइट, राइट? लेकिन वो जो पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं इन एंड ऑफ देमसेल्व्स अलोन, दे डू नॉट होल्ड मच वैल्यू. बट लेट अस से यहां पर मान लीजिए आपको इस तरह का एक कनेक्टिंग पैटर्न दिखा, तो यू नेम इट समथिंग, मे बी Sagittarius, मे बी Cancer, etc. Whatever, I'm not very familiar with those things, but constellations you are able to identify. तो ये जो लाइन है ना, this is actually not visible. It is up to your imagination, right? Similarly, let us say a historical development takes place. For example, the withdrawal of the non-cooperation movement. So what was the reason for the withdrawal of the non-cooperation movement? चौरी चौरा इंसिडेंट सुना है? तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, गांधी जी फेल्ट दैट इट वाज against his idea of non-violent satyagraha. Morally it was wrong and he could no longer justify the continuation of the non-cooperation movement. ठीक है? That is the story that we have all learned right from childhood. But this is only one perspective. This is only one explanation that has been given. Other historians have given other explanations. For example, colonial historians क्या बोलेंगे? For example, अभी छोड़ो, historical example छोड़ दो यहाँ पर. Operation Sindoor, I'm sure everybody knows about it, right? सीज फायर की डिमांड कहां से आई? इंडिया ने पाकिस्तान को अप्रोच किया, पाकिस्तान ने इंडिया को अप्रोच किया. पाकिस्तान ने इंडिया को बोला, भीख मांगी कि हुजूर बहुत मार खा ली, अब छोड़ दो, राइट? नाउ द टाइम इज ओवर. बट किसी पाकिस्तानी से जाके पूछो, वो क्या बोलेगा? कि हमने इंडिया के बहुत सारे प्लेन गिरा दिए, उनको इकोनॉमी में नुकसान हो रहा था, दैट इज व्हाई दे केम बेगिंग. ठीक है? सिमिलरली यहां पर भी ये जो पोजीशन है, दैट विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ मॉरल डिसीजन बाय महात्मा गांधी, ये गांधीयन हिस्टोरियंस बोलेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ गांधीयन हिस्टोरियंस, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस. बट जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू सी दिस as a sign of moral strength or as a sign of weakness? As a sign of weakness. They are going to say that Gandhi felt that he was losing control of the movement, that Gandhi felt that the masses were no longer ready to listen to him, that the mood of the masses was getting uncontrollably radicalized. Further,
पॉपुलर रिस्पॉन्स अब गांधी के लिए नहीं हो रहा था. गांधी वॉज अ सेल्फिश लीडर. ही वॉज प्लेइंग अ हाई लेवल पॉलिटिकल. They are going to say that Indian national movement was not actually a freedom struggle. People of India are still slaves. Earlier, they used to be slaves of the British political class. Now they are the slaves of the Indian elite political class. That is how they are going to frame the Indian national movement. That is their perspective. Okay? If you are ask a Marxist historian, they are going to tell you that Mahatma Gandhi was actually interested only in the protection of the rights of the landed elites, zamindars, industrialists, and the progression of the movement had turned against them. The mood of the masses was becoming anti-zamindar, anti-industrialist. So they give the example of things such as the Mopla riots, such as the Eka movement, where peasants had started to act against zamindars. गांधी जी एक्चुअली में किसके हितैषी थे? Was he actually interested in the welfare of peasants or only in protecting the property and interests of the zamindars? मार्क्सिस्ट स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि एलिट्स के हमेशा हितैषी रहे. तो once the movement started becoming anti zamindar, he suddenly withdrew it in order to deflate the radical anti zamindar movement. ठीक है? तो one event, three different causes are going to be given. यहां पे भी ये हिस्टोरियोग्राफी वाला ही क्वेश्चन है, बट causative reasons, the causative factors, causal factors, those we have to establish over here. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एनालिटिकल टाइप में. देन one type of question which appears quite regularly, especially in paper 1, पीरियडाइजेशन का. ठीक है? तो ट्रेडिशनली इंडियन हिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, हाउ मेनी पार्ट्स हैज इट ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड इनटू? इंडिया की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अपना जो यूपीएससी सिलेबस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स. कौन कौन से? एंशिएंट, medieval, modern. But now there is an understanding that this is insufficient. Why? Because it leaves many important parts of Indian history in the dark, right? And therefore, this 3-part division is no longer sufficient. We need to expand it to 6 parts. Ancient, medieval, modern, ये तो रहेगा, लेकिन एंशियंट मेडिवल के बीच में एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन होगा, अर्ली मेडिवल. मॉडर्न, मेडिवल और मॉडर्न के बीच में अर्ली मॉडर्न, एंड मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न या फिर पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. ठीक है? तो दीज 6 पार्ट्स. फर्दर, has Indian history always been divided into the 3 parts of ancient, medieval or modern, or was there some other categorization earlier? The earliest categorization was done by colonial scholars. Instead of saying that Indian history has progressed through 3 stages, ancient, medieval and modern, they said Hindu, Muslim and British period, right? They were also writing history from a particular perspective. So with the passage of time, with our changing understanding of the flow of history, periodization also keeps coming into question, right? For example, related to periodization only, you are going to find several questions of the comparative type. So comparison of particular developments in Indian history with global developments, particularly with European history. For example, you may be asked to provide comparison of one or more aspects of the Bhakti and Sufi movement with the Protestant movement or Reformation movement in Europe, right? उसके साथ comparison हो सकता है कि was it also having the same modernizing effect on Indian history, on Indian society or not? Because Reformation के तुरंत बाद क्या आता है? Enlightenment, right? So with this begins the modern age of Europe. Was Bhakti or Sufi able to bring about the same type of change or not, right? So comparative analysis, etc. These kinds of questions may also be asked. Then there may be certain
questions source based. With regards to the source based questions, these are going to appear only in paper 1. They are not of much relevance for paper 2. So you will be asked to talk about the utility of some primary sources. For example, let me give you a few examples. What is the utility of archaeology in the reconstruction of history? That may be one type of question. Or how can archaeology help in the better understanding of literary sources? You may be asked to compare and contrast indigenous literature with foreign literature. Whether ancient Indians even possessed a sense of history writing, or was it a gift of Islamic culture to India? You may be asked to evaluate particular writers, for example, Kalhan as a historian, Al-Baruni as a historian, Ibn Battuta as a historian. So these may be the generic type of questions. Or you may be asked to go into the specifics of these writings and enlighten the or shed light on the views of Arthashastra, Kautilya ka Arthashastra, on the issue of society, right? Or how does the Brahmanical position taken by Kautilya differ from the traditional position in the Dharma Shastras? The comparison of Arthashastra versus Dharma Shastra in the field of society. These kinds of questions may be possible as well. Okay? So broadly, these are the two types of questions that are going to appear. समझ में आया है? Online students, I hope this is also clear. Yeah. All right. Good. Good. Now, one thing also that I want to talk about are your command words or keywords. So at the end of most questions, you will find one or two words. Na? So question may be that the Neolithic revolution was no revolution at all. Critically examine. So what does that critically examine mean? So about that, I wanted to give you certain insights. Obviously, this is going to be something that we are going to demonstrate in real time when our first actual session begins. But I want to give you a general idea. Okay? So you may divide these keywords into primarily two categories, right? That is elucidate, illustrate, enumerate, elaborate, etc. और दूसरी साइड पर एनालाइज, डिस्कस, critically analyze, critically discuss, validate, justify, etc. Right? तो यहां पर ना your task is very easy. Whatever is the thesis statement, जो पैरामीटर वाला सेटिंग स्टेटमेंट है, उसको आपको सब्सटैंशिएट करना है. ठीक है? You don't need to present any arguments against it. For example, if the question was Neolithic revolution was no revolution at all, elaborate, versus Neolithic revolution was no revolution at all, critically examine, तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर एकदम अलग हो जाएगा. ठीक है? तो on one side ये elaborate करने को बोल रहे हैं, on one side critically examine करने को. थीसिस स्टेटमेंट क्या है?
Neolithic revolution was no revolution at all. Now, if you are being asked to elaborate, what do you have to do? You have to explain to the examiner why we should not consider the Neolithic revolution to be revolutionary. Okay? So both answers are going to have introduction, body and conclusion. But in every portion, you are going to have a different approach. For example, since you have to prove in the first question that Neolithic revolution was not a revolution, how are you going to begin? You are going to say that although Vincent Gordon Child emphasized upon the changes that took place during the Neolithic period as revolutionary, there were several limitations to this revolutionary framework. Okay? So you are going to highlight that there were various limitations. ठीक है? दूसरी जगह पे क्या बोलोगे? That Vincent Gordon Child has emphasized upon the Neolithic changes as revolutionary, but certain scholars have challenged it, resulting in the emergence of a debate. ठीक है? तो यहां पे बताओगे कि लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे. Over here, you are going to say, inform the examiner that this is a matter of debate. Following में हम इस डिबेट को और ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे. देन बॉडी में आपका काम क्लियर है. क्या करना है? ये लिमिटेशंस एक के बाद एक आपको एन्यूमरेट करनी है. व्हाई इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी. ठीक है? यहाँ पे योर आंसर इज गोइंग टू कंसिस्ट एटलीस्ट ऑफ टू पोर्शंस, राइट? दैट व्हाई इट शुड बी कंसिडर्ड अ रेवोल्यूशन, why it should not be considered a revolution, and if you know कि अभी historical consensus क्या है, you can anticipate the conclusion as well कि भाई limitations हैं but फिर भी इसको revolutionary माना जाता है. ठीक है? that is the historical position. यहाँ पे क्या करना है? You cannot take this position and यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? On this basis we cannot consider the changes that took place during the Neolithic age to be revolutionary. तो जो क्वेश्चन में थीसिस स्टेटमेंट था वो आपने यहाँ पे पहले वाले केस में प्रूव कर दिया. इज दिस क्लियर? सेकंड वाले केस में क्या करोगे? दैट डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, जो चेंजेस हुए हैं न्यूलिथिक एज में, दे कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एंड देयर इंपॉर्टेंस मस्ट बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल चेंज. कि इसके 5 लाख साल पहले तक इंसान स्टोन एज में ही रह रहा था, बट Neolithic revolution was that transitional period which took human beings from the Stone Age right to the Stone Age within a short period of 10,000 years. Right? Therefore, it was actually revolutionary in nature. समझ में आया है? पक्का? Online students? Yeah? All right. Good. अच्छा. Then, students generally have one confusion, right? That when you are preparing for GS history, more focus is not on argumentation and analysis, rather it is on absorbing facts. So this has to be done as part of history optional also. Right? Arguments important hote hain, but you have to substantiate them with facts, right? So what is the more important one, facts or arguments? तो बताइए, what should be your objective to write a good answer? Should you be providing diversity or multiplicity of facts? Should you be overloading your answer with evidence according to this scholar or according to this inscription or according to this book we are trying to prove one argument? Or should it be the other way around, that you should focus on multiplicity of arguments and then substantiate them with relevant facts? So, for example, क्वेश्चन पूछा गया है दैट लेट अस से हाँ दैट
foreign sources or foreign literature or foreigners accounts are a valuable source of Indian history. Okay, this is this question. uh, Now you have to make arguments in favor of this, right? So you make one argument that foreign sources may help fill the gaps in Indian history, right? And then you say, you try to demonstrate it. For example, had it not been for Greek writers, we would never have known about Alexander's invasion of the northwestern portion of the subcontinent. Further, you may say that without the rich descriptions provided by foreign travelers during the medieval age, we may never have been able to appreciate the true scale, splendor, and grandeur of the city of Vijayanagar. Okay? Further, you may say that without the Greco-Roman scholars of the post-Mauryan period, we may never have recognized the volume and importance of trade between India and the Roman Empire during the post-Mauryan period. और ऐसे ही करते करते आप 7-8 एविडेंस दीजिए और खत्म कर दीजिए आंसर को, राइट? Is this going to fulfill the actual demand of the question? Think about the demand of the question. क्या है? That we need to talk about the importance of foreign sources for recreating ancient Indian past. Have we fulfilled the actual demand? Have we talked about all the ways in which foreign evidence was or foreign accounts were important, or have we highlighted only one importance, only one aspect? एक ही के बारे में बात करिए, उसी को प्रूव करने के लिए हमने 8-10 एविडेंस दे रखे हैं. दिस शुड नॉट बी द प्रायोरिटी. ठीक है? यस, ऑल दीज एविडेंसेस आर वैलिड, लेकिन इनमें से एक भी आप लिख के आते तो आपका काम हो जाता. तो फोकस शुड नॉट बी ऑन दिस, रादर it should be on dimensional diversity, on argumentative diversity. So you make one argument, use one piece of evidence to substantiate it. Then introduce another argument. Kya? That it helps consolidate the chronology of Indian history as well. For example, had it not been for Greek scholars who reported the invasion of Alexander in the northwestern portion of India between 326 to 324 BC, would we have been able to fix the date of the beginning of Mauryan rule to 321 BC? नहीं हो पाता, right? So that provided a very important reference point in Indian history. तो आपने एक के बजाय दो arguments लिखे. Apart from the second, third argument, that foreign sources offer a unique perspective. Why? Because what foreign intellectuals considered important was not necessarily the same as what Indian intellectuals may have considered important. So they focused upon those aspects of Indian society, Indian history, Indian polity, which were routine, which were mundane, which were unremarkable to Indian scholars. Okay? So they, along with the indigenous sources and other sources of Indian history, help create a more colorful, more comprehensive picture of the past. Further, many of these foreign travelers came to India as diplomats or pilgrims or students or traders, etc. Right? And since they were involved in all these different roles, the collection of foreign accounts give us a very important snapshot of the flow of Indian history. Why? Because they were engaging with people from specific ways of life.
Diplomats must have moved around in official circles. They must have had audiences personally with the rulers. They must have come face to face with important ministers, policymakers, etc. They would be able to provide a unique insight into Indian polity of the past. Traders would have come into contact with members of the Indian trading community. They would be in a better position to talk about things such as the economy, monetary system, shipbuilding, trade routes, important ports, types of tolls, taxes, etc. ये सब है ना. So this is what you can talk about. They can help create a more comprehensive picture as well as illuminate hidden aspects of Indian past. Now यहां पे इसको रोक देते हैं एक्सरसाइज को. आगे जाकर के इस तरह के क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे करेंगे ही. Which of these two types of answers do you feel are more valuable? पहला वाला टाइप या दूसरा वाला टाइप? दूसरा वाला. ठीक है. इससे हमको एक और चीज पता लगती है. कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए? अभी भी नहीं समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कंटेंट के पीछे मत भागिएगा. ठीक है. पिक वन गुड सोर्स. आपके पास सारे हैंडआउट्स हैं. अभी क्लास खत्म होने तक फाउंडेशन के जितने भी हैंडआउट्स हैं ना आपको अवेलेबल हो जाएंगे. नाउ व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट यू टू डू is before coming to class on the coming Sunday, you would have gone through, मतलब कल मैं एजेंडा आपको लाइव दे दूंगा, पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा. उसमें मेंशन्ड होगा कि कौन से लेक्चर से कौन से लेक्चर तक आपको वीडियोस देख करके आने हैं. क्लियर है? अच्छा. साथ में मैं आपको 7-8 सवाल भी दूंगा. प्रॉब्ली 8 क्वेश्चंस फॉर टुमारो. ठीक है. What you have to do is that before you watch those videos, आपको ये पता लग जाएगा टाइटल से कि कहां से कहां तक का सिलेबस कंप्लीट हुआ है. तो यू लुक थ्रू दोज नोट्स, यू रीड दोज नोट्स एक्टिवली. ठीक है. पहले क्वेश्चंस को देखिए, उन नोट्स को देखिए. ट्राई टू हाईलाइट दोज पॉइंट्स विच आर द मोस्ट रेलेवेंट फॉर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. तो अभी आपका जितना हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग है, यूज दैट टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ दोज नोट्स दोज पॉइंट्स विच यू थिंक आर गोइंग टू बी of the most relevance. ठीक है. Then after having watched these videos, try to attempt all these questions on your own before coming to class. ठीक है. Not after coming to class, before coming to class, and then you bring all these things to class. ठीक है. मतलब वो आंसर लाने की जरूरत नहीं है. आंसर तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, बट आफ्टर हैविंग डन ऑल दिस होमवर्क देन कम टू क्लास. वहां पे आपको क्लियर होगा दिस डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट. तो कंटेंट में क्या होता है ना कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर इन हिस्ट्री. तो आपके करीब 40 चैप्टर से पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके एक एक चैप्टर पे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिखे हुए हैं. राइट. डू यू थिंक इट इज रियलिस्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू read or absorb any of these, all this thing? No. So pick one standard source. Ensure that that source is good enough to bring you to about 80% of what an expert would be able to do. ठीक है. तो वहां तक ही पहुंचना है. 100% का गोल नहीं लेकर के चलना है. वहां के लिए जाओगे तो मेरे जैसे टीचर ही बनोगे, अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाओगे. क्लियर है? तो वहां तक का पहुंचना है आपको. So for that, your foundation notes are going to be more than sufficient. We are currently in the process of updating those notes as well. ठीक है. तो पेपर 1 के नोट्स में पहले थोड़े लिमिटेशंस थे, कुछ टॉपिक्स मिसिंग भी थे, तो वो भी ऐड करवाए जा रहे हैं. एंड सम चेंजेस, मतलब बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, थोड़े चेंजेस हैं. फॉर एग्जांपल इन सम प्लेसेस आई फेल्ट दैट एक आंसर यहाँ पे एक क्वेश्चन एंड आंसर इंक्लूड कर दिया जाता, तो इट वुड हैव एनरिच्ड दोज नोट्स. तो दोज आल्सो आई हैव एडेड इन दोज नोट्स. क्लियर है इतना? अच्छा. तो ये काम आपको रोज करना रहेगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट? अंडरस्टूड. अच्छा. देन एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का दैट देयर आर सो मेनी डेट्स इन हिस्ट्री, हाउ कैन वी रिमेंबर ऑल ऑफ देम? आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल द एग्जैक्ट डेट्स. तो अभी बताओ कि आर डेट्स एक्चुअली ऑल दैट इंपॉर्टेंट? अब फॉर दिस you should be able to appreciate
how the understanding of history has evolved over time, right? पहले क्या थॉट प्रोसेस होता था कि हिस्ट्री कौन बनाते हैं? राजा लोग बनाते हैं, आर्मीज बनाती हैं, बैटल्स बनाते हैं, विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, इन सब से हिस्ट्री बनता है। तो इफ यू अंडरस्टूड हिस्ट्री थ्रू दैट पर्सपेक्टिव, तो वहां पे तो डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई कब हुई, दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। बट विद टाइम ना, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री हैज आल्सो इवॉल्व्ड, इट हैज बिकम more nuanced, more sophisticated. कि it is not only rulers or battles that shape history. Rather, it is processes that shape history. That history is a continuum जिसमें full spectrum of changes एक साथ simultaneously चल रहे होते हैं. Yes, political changes are part of that, but they are not the only change or not even the most important type of change. Rather, polity itself may be changed or may evolve due to social changes, cultural changes, economic changes, philosophical changes, ideological changes, etc. Right? So we must take all this into account. And पहले का जमाना जो था ना हिस्ट्री का, वो किसी टेस्ट मैच के हाईलाइट रील्स की तरह था। ठीक है? तो आपको केवल इनके बारे में बताया जाता था। नाउ एम्फेसिस किसके ऊपर हो गया है? कॉजेशन के ऊपर, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। सो इट इज दीज प्रोसेसेस दैट वी मस्ट बी फोकसिंग अपॉन, right? So we now are taking a much more broader view of history. It is no longer going to be a highlight reel of important events. If it is a highlight reel at all, it is going to be a highlight reel of important processes. Now, these processes, historical processes, na, they unfold over many lifetimes, right? So that is why पहले जब हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन होता था इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, डिवाइडिंग लाइन क्या होता था एंशिएंट मिडिवल के बीच में? 1192 और 1206 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत और विक्ट्री ऑफ घोरी ओवर पृथ्वीराज चौहान, राइट? अब क्या हो गया है? एंशिएंट और मिडिवल के बीच में एक 500 साल का पीरियड इंसर्ट कर दिया गया है, अर्ली मिडिवल एज, राइट? तो नाउ दैट हैज चेंज्ड। इन दिस, dates do not remain very important, rather chronology is more important than dates. ठीक है? So when I say chronology, it is not just the sequential arrangement of events. यहाँ पे वो जो तारे दिख रहे हैं ना, उसके बीच के connecting lines भी involved है. Those processes are also involved. The cause and effect relationship, that becomes more important. That is why understanding and appreciating the chronology is much more important than dates. So in the course of our preparation also, you are going to come across some hard dates. अब उसमें से कुछ तो हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और वो बहुत बचपन से पढ़ रहे हो तो बहुत नेचुरली याद भी हो जाएंगे। बट इन मोस्ट केसेस ना, यू आर गोइंग टू सी कि हम किसी ईयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रादर वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ मिलेनियम्स और सेंचुरीज और डेकेड्स एक्सेट्रा। एज वी कम नियरर एंड नियरर टू मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में हम डेकेड्स के में बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे हाफ अ सेंचुरी में बात करने लग जाएंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, सेकंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। उससे पीछे जाएंगे तो सेंचुरीज में बात करने लग जाएंगे कि 14th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुआ, 15th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुआ, और उससे भी पीछे जाएंगे वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ मिलेनिया और एजेस। ठीक है? कि गुप्ता एज, मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन एज। तो जो टाइमलाइन है वो और ज्यादा एक्सपैंड होता जाएगा एज वी मूव अवे, मतलब मोर एंड मोर इनटू द पास्ट। इज दिस क्लियर? समझ में आया है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? गुड। Another FAQ that students generally have कि what is the difference
between answer writing for GS and answer writing for optional. तो बताइए जरा, अभी तक जो आप लोगों ने सीखा है उससे क्या समझ में आ रहा है? Are the requirements for GS answer writing and optional answer writing going to be the same, or are they quite different from each other? They're quite different from each other. On one hand, GS में what are the types of questions that are asked? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, नैरेटिव टाइप क्वेश्चंस होता है, जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था ना यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ, नैरेटिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. तो हियर यू विल बी एबल टू आस्क, यू विल बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर फिनोमेना प्राइमरीली. हाँ, कुछ आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, बट इन मोस्ट केसेस स्पेशली हिस्ट्री में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. राइट. एंड ऑप्शनल में मोर analytical type questions, right? In GS, your focus is going to be primarily on dimensional expansion with factual substantiation. But ऑप्शनल में क्या होता है, यहां पे भी डायमेंशनल एक्सपेंशन करना होगा, बट नॉट ओनली विद सब्सटैंशियल फैक्चुअल सब्सटैंशिएशन, बट ऑल्सो विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉजेशन. ठीक है, तो डायमेंशनल एक्सपेंशन विद कॉजेशन. तो क्योंकि दोनों में अलग अलग जरिए हैं मार्क्स को ऑब्टेन करने का, तो दोनों का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी भी थोड़ा अलग होता है, दोनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अलग अलग तरह से करी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया जीएस के पेपर में भी, ऑप्शनल के पेपर में भी, कि शेड लाइट अपॉन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, इफ यू वर टू राइट अ जीएस वाला आंसर, क्या बताओगे? कि भाई मल्टीपल सेट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, मिलिट्री रेजेंटमेंट, पॉपुलर राइजिंग पॉपुलर डिसकंटेंट ड्यू टू सोशो रिलीजियस, यू कैन से एनिमिटी, राइट, रिलीजियस फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, देन इमीडिएट ट्रिगर के बारे में बताओगे, राइट. तो अलग अलग सेट्स ऑफ फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे. ठीक है, वहां पे वो काम कर दोगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, यू हैव सिंपली गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड. अब यहां पे अगर वही सेम क्वेश्चन आता है तो इज दिस स्ट्रेटजी गोइंग टू बी सफिशिएंट? मान लो जीएस में यही 20 नंबर का सवाल आया होता एंड यू हैड रिटन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे बी गेटिंग 11, 12, even 13 marks if you are executing it well. But 20 marker question, same one, if you write GS type answer, you won't be getting, I can guarantee you won't be getting more than 6, 7 marks. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या करना होगा? Yes, so historiography becomes very, very important over here. So you are going to have to substantiate your views in accordance with views of historians as well. Further, apart from this, there is going to be some degree of argumentation also. That historians के बीच में एक मत नहीं होगा. There is going to be lack of consensus on which factor was more important. ठीक है, तो colonial scholars क्या बोलेंगे, सबसे important factor क्या है? एनफील्ड राइफल. दैट इज अ मिस्टेक, दे एडमिट टू इट. ठीक है, कि ग्रीस कार्ट्रिजेस इशू हुआ एंड द हिंदू एंड मुस्लिम सीपॉयज ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी बिट्रेड देयर सुपीरियर ऑफिशियल्स. नमक हरामी करके बोलेंगे वो लोग. ठीक है,
नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या बोलेंगे कि भाई ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ना, that had resulted in the aggravation of exploitation of Indians. So it was a form of, you can say, popular uprising against economic exploitation. जो नेशनलिस्ट कॉन्जर्वेटिव नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं वो सब तो चलो ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज कि रिलीजन के ऊपर अटैक हो रहा था, कल्चर के ऊपर अटैक हो रहा था. द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इरेज द इंडियन वे ऑफ लाइफ. दे वर ट्राइंग टू फोर्सिबली वेस्टर्नाइज इंडिया, कन्वर्ट इंडिया, कल्चरल कॉलोनाइजेशन करना चाह रहे थे. तो इट वाज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट. ठीक है, इस तरह से अलग अलग हिस्टोरियंस के, अलग अलग हिस्टोरिकल स्कूल्स के अलग अलग मत हैं. तो ओवर हियर वी नीड टू ब्रिंग दोज आउट. ठीक है, ये अगर करके आओगे तो यहां पे फिर वही 13 नंबर मिलेंगे. लेकिन अगर ये काम वहां पे कर दिया ना तो मामला उल्टा पड़ जाएगा. तो अलग अलग अप्रोच लेकर के चलना है दोनों के लिए. समझ में आया है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज क्लियर एज वेल. या अंडरस्टूड? गुड. देन एक और जनरल क्वेरी रहता है स्टूडेंट्स का, that if it is a question regarding particular debate in history, can we take a solid stance in favor of one or against a particular point of view? ठीक है, तो आप बताइए ऐसा करना ठीक होगा या गलत होगा, या हमेशा न्यूट्रल ग्राउंड पे ही कंक्लूड करना चाहिए कि भाई ये इसने बोला, ये इसने बोला, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड. क्या करना चाहिए इसमें? हाँ देखो, तो शुड वी टेक अ स्टांस? नाउ अब यहाँ पे दो तरह के डिबेट्स हैं, ओपन डिबेट्स एंड क्लोज डिबेट्स. इन मोस्ट केसेस, जनरली मैं बता रहा हूं, इफ इट इज अ क्लोज डिबेट जहां पे मोस्ट हिस्टोरियंस अग्री विद वन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, आप एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते हो उस पोजीशन के फेवर में. तो ओवर हियर इट बिकम्स पॉसिबल. तो फॉर एग्जाम्पल, डिबेट विद रिगार्ड्स टू द origin of the Harappan civilization. So earlier there was a very strong historical position कि Mesopotamians had come to the Punjab region and set up the Harappan civilization. But now most historians have rejected that. तो यहाँ पे आप बहुत clearly बोल सकते हो कि भाई we may not be able to clearly define कि what were the exact processes involved in the establishment of the Harappan civilization. वहां पे भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं, लेकिन एक चीज तो पक्का क्लियर है कि फॉरेनर्स का काम नहीं था, इंडियंस की कारस्तानी थी ये बोल सकते हो कम से कम. समझ में आया? अच्छा, बट वेयर द डिबेट्स आर नॉट येट सेटल्ड, तो वहां पे विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू टेक एनी पोजीशन ऑफ आवर ओन? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? इट मे बी पॉसिबल, बट इन मोस्ट केसेस इट इज जनरली नॉट एडवाइज्ड. ठीक है, तो जनरली केस में बोल रहा हूं कि नहीं लेना चाहिए. यू शुड लीव द आंसर ओपन एंडेड. तो आप सारे आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड करिए. तो एक साइड की दलील आप बताइए, फिर दूसरी साइड के भी वकील बन जाए, उसकी भी दलील बताइए, कोई और स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू आके रखिए. बट इन द एंड you can say that because of these limitations probably the truth will always remain hidden from us. ठीक है, कि मान लीजिए origin of the Harappan civilization का ही क्वेश्चन है, and if the question is saying can there ever be a final word with regards to the debate surrounding the origin of the Harappan civilization, तो आपको एंड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, उसका मतलब स्क्रिप्ट इज येट अनडिसाइफर्ड, therefore we are not able to know about the actual process of historical development that took place during the
Harappan civilization. So what were the kinds of religious forces, cultural forces, economic forces that led to increasing cohesion within the Harappan civilization? तो वो अलग अलग कल्चर से जुड़ करके एक civilization कैसे बनता है, what were the exact processes involved, we may never be able to know without deciphering the Harappan script. ठीक है, that is the open neutral position कि हाँ this is the limitation, मेरी कोई गलती नहीं है, ये नहीं लिखना है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन this is the position in history. Clear है? But in some other open-ended questions, it may be valid to take a stance as well. But once again, only do this if you are able to substantiate your arguments. ठीक है? तो it may be possible in some cases. Now, if you were to ask any historian from Europe or America, Alexander, great or not, क्या बोलेंगे वो? Great. Churchill, great or not? Great. Hitler, he was great, but he epitomized the greatness of evil. He was a monument of evil. Stalin, also the same. Genghis Khan, also the same. Ghori, also the same, right? But was there any real difference between, let us say, what Alexander did and what Genghis Khan did? In fact, Genghis Khan probably exceeded, overachieved Alexander at least by a degree of 20 times. Okay? So, who should be actually considered great? It should be Genghis Khan who should be great. So, there is a particular brand of hypocrisy that is visible in the Western schools of history. तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हमेशा से हिस्ट्री को थ्रू द कल्चरल सिविलाइजेशनल लेंस लिखते हैं. वो बोलते हैं दैट दिस इज द ऑब्जेक्टिव वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, बट वो खुद अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं. दे हैव अ वेरी पायस सैंक्टिमोनियस एटीट्यूड कि नहीं हमने लिख दिया है तो इसका मतलब सही होगा, राइट? तो दैट इज एन एटीट्यूड जिसके अगेंस्ट अब वॉइसेस हैव स्टार्टेड टू emerge, right? This is exactly what post-colonial history writing is trying to achieve. It is trying to destroy the established or challenge the established Western narrative. कि भाई ठीक है, you may be the custodians of the history of your own culture or your own continent, but भाई किसने आपको वसीयत में लिख दिया कि आप इंडिया की हिस्ट्री भी लिखोगे, right? We are going to define our own history, and in this context हम आपके जो भी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनके, सिंस यू हैव टेकन द लाइसेंस टू राइट अबाउट आवर हिस्टोरिकल फिगर्स, वी आर आल्सो गोइंग टू हैव द लाइसेंस टू राइट अबाउट योर हिस्टोरिकल फिगर्स. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला है. इफ यू आर सेइंग दैट अलेक्जेंडर वाज ग्रेट, देन यू आल्सो आर सेइंग दैट हिटलर वाज इक्वली ग्रेट. तो अब बताओ ग्रेट है या नहीं है, इट इज अप टू यू. ठीक है, कि अगर आप बोल रहे हो कि अलेक्जेंडर ग्रेट है, तो बाय डिफॉल्ट यू आर आल्सो अग्रीइंग दैट हिटलर इज आल्सो ग्रेट. तो इसमें तो उनको नानी याद आ जानी है अगर इतना हो जाता है तो इस तरह के चेंजेस अब होने लग गए. तो हाँ, बट ये स्टांस यहाँ पे आपको तभी लेना है इफ यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंटेशन. एंड आंसर थ्योराइजेशन के टाइम पे ना, डिस्कशन के टाइम पे, इट इज पॉसिबल टू टेक अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ. इसी टॉपिक के ऊपर हम पिछले 5-6 मिनट से बात कर रहे हैं. आपको लगता है कि हम एक्चुअली आंसर हॉल के अंदर इतना टाइम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. अगर देना भी होगा तो विल हैव टू कम अप विद प्री आर्टिकुलेटेड आर्गुमेंट्स, जो कि यहाँ पे आप अपनी मेमोरी से जाकर के चिपका सको. तो इट कैन बी रिस्की बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी रिवॉर्डिंग. ठीक है, तो जैसे गुड्डो है बोलते ना, रिस्क तो है तो वहां पे रिस्क तो है पर रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है. ठीक है, तो these are some of the things that I wanted to talk about. And now I'm opening the floor to online students as well as students sitting offline. अगर कोई doubts हो तो you can one by one unmute yourselves and ask me. In the meanwhile, अगर आप लोगों को कोई doubts हो तो please पूछ लीजिए. No doubts? Online students?
Ankita is asking, in the beginning of the class, you told that paper 1 can be divided into 2 parts and the strategy for the same is there in the first video. Is it the first video of the foundation class on YouTube? नहीं, स्ट्रैटेजी फॉर मैपिंग इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो मैपिंग का स्ट्रैटेजी, मैपिंग मॉड्यूल का जो पहला वाला वीडियो है ना, उसमें 11 वीडियोस हैं. तो उसमें जो सबसे पहला वाला वीडियो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. अगर आप चाहो तो बाकी 11 वीडियोस ना भी देखो तो भी काम चल जाएगा, बट वो 15-20 मिनट का जो पहला वीडियो है उसको जरूर देख लेना. ठीक है. अच्छा, फॉर नेक्स्ट संडे 8 क्वेश्चंस वेयर वुड बी द हैंडआउट्स ऑफ लेक्चर्स बी प्रोवाइडेड. तो मंडे को अराउंड 12 PM आपके पोर्टल पर एक हैंडआउट अपलोड हो जाएगा. तो पोर्टल पे चेक करिएगा, उसमें मटेरियल्स वाला जो सेक्शन होता है वहां पे मिल जाएगा आपको. Yes, we are going to be beginning with ancient history. Regarding ancient history handouts, are they going to be enough or do we need reference books like Upinder Singh? तो उपिंदर सिंह, इग्नू मटीरियल, एनसीईआरटी और दूसरी किताबें, रोमिला थापर की जो किताबें वगैरह हैं, उन्हीं उन्हीं में से चीजों को ले करके हमने रिफॉर्मुलेट करके अपने हैंडआउट्स बनाए हैं. ठीक है, तो मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आउट ऑफ दोज बुक्स वी आर ऑलरेडी गोइंग टू बी कवरिंग थ्रू आवर हैंडआउट्स. तो अगर आपको एक सेफ्टी नेट की तरह उसको रेफर करना है तो आप कर सकते हो, बट दैट वुड इन्वॉल्व अ ग्रेट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. टाइम कम रहता है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप वो नोट्स पे रिलाई करो. दे आर मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. When will be provided with your mapping book? Book do online students get provided PDF और physical book? तो मैपिंग बुक जो है, आप जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं यहाँ बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को अभी मिल जाएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम PDF नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो यू गेट इन टच विद द फ्रंट डेस्क. एक फॉर्म फिल करना होगा, उसमें आपको अपना एड्रेस बताना होगा. दैट इज इट. द बुक इज गोइंग टू बी शिप्ड आउट टू यू. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा, जो अभी ऑफलाइन बैठे हो ना, जितने चुप्पी साध के बैठे हो, ऐसा मैं चलने नहीं दूंगा. तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू पार्टिसिपेट रेगुलरली, क्योंकि जो क्लासेस होंगी ना इंटरैक्टिव होंगी. तो आई विल बी आस्किंग यू टू थिंक एक्टिवली अलोंग विद मी. तो मैं भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आई विल बी आस्किंग योर इनपुट्स एज वेल. ठीक है, साथ में मिलकर के आंसर हम लोग बनाएंगे. हाँ. हम्म. हाँ, वो बिल्कुल होगा, बट दैट इज गोइंग टू बी, वही बोल रहा था ना कि जैसे इंट्रोडक्शन बनाना है, कैसे कंक्लूजन कैसे करना है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके ही बेहतर होता है. तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू सी कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल में आंसर राइटिंग को हिस्टोरियोग्राफी से ज्यादा सेपरेट कर ही नहीं सकते, स्कोप नहीं होता है. तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू आर गोइंग टू गेट अक्वेंटेड विद ऑल द रेलेवेंट हिस्टोरियोग्राफी, कि कौन से रेलेवेंट हिस्टोरिकल स्कूल्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आते हैं, उसमें से कौन 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 से स्कूल में कौन से हिस्टोरियन ने क्या बोला हुआ है. इस तरह की चीजें आपको जो भी आर्गुमेंट्स देंगे ना, वो ज्यादातर केसेस में हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ही दिए जाएंगे. हाँ, लेकिन जो नैरेटिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप होता नहीं है. तो ये मान के चलिए कि मतलब हिस्टोरियोग्राफी आपकी पूरी हो जाएगी और शुरू से ही हम लोग शुरू करेंगे उसको. ठीक है. विद इन हाउ मच टाइम विल वी कंक्लूड दिस कोर्स इन दिस प्रोग्राम? तो कोर्स का जो शेड्यूल है दैट इज 32 वीक्स लॉन्ग. राइट. तो 32 वीक्स कितना हो गया? 7.5 months के अराउंड. राइट. तो 7.5 months जून में शुरू कर रहे हैं, जनवरी एंड में या फरवरी के बिगनिंग में वी शुड बी एंडिंग. एनीथिंग एल्स? आप लोग चाहो तो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, माइक ऑन करके. क्वेश्चन इज, सर व्हेन विल मैपिंग वाला फेज स्टार्ट?
तो मैपिंग का मॉड्यूल अभी अपलोड नहीं हुआ है क्या आप लोगों के पोर्टल पर? पोर्टल पे अभी कुछ अपलोड नहीं हुआ है, तो आज अपलोड हो जाएगा आप लोगों को। मतलब मैपिंग बुक तो आप अभी कलेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मेल कर देंगे। एक सेकंड। एंड जो ये क्या बोलते हैं मैपिंग मॉड्यूल, आप साइड बाय साइड शुरू कर सकते हो। पहला वाला वीडियो देखोगे ना, उसमें जो स्ट्रैटेजी वाला है, आई थिंक इट इज टाइटल 00 करके स्ट्रैटेजी, मतलब वीडियो नंबर 0 स्ट्रैटेजी। एंड देन उसके बाद 10 मैपिंग के कंटेंट वाले वीडियोस हैं, तो वो करीब 15-20 मिनट का है। वहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि कब से शुरू करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, तो अभी मैं अपलोड करवा देता हूँ, दैट वर्क इज ऑल्सो ऑन गोइंग। ओके, हाँ जी, क्या बता रहे थे आप? हाँ, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। And we get recordings of these live lectures? If yes, is there any time limit to watch them? So yes, recordings are going to be provided on your portal. तो आई थिंक कि 2 बार देख सकते हैं, एंड दे रिमेन वैलिड फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स ड्यूरेशन मान लीजिए आपका 1 साल का है, तो 1 साल तक वीडियोस उस पोर्टल पे ही रहेंगे। यू कैन वॉच इट अ टोटल ऑफ 2 टाइम्स। एक बार चेक कर लीजिएगा कितने टाइम, आई थिंक इट इज 2 टाइम्स। लास्ट टाइम तो ऐसे ही था, इस बार कुछ चेंज हुआ हो तो आई एम नॉट श्योर, एक बार पता करना पड़ेगा उसके लिए। but try to keep pace with the actual course। हाँ, once you start falling behind तो एक sense of complacency हो जाता है कि हफ्ते में एक वीडियो होनी है यार, एक लेक्चर करना है, इस हफ्ते का नहीं किया तो अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले हफ्ते का नहीं किया तो अगले हफ्ते कर लेंगे, कि अरे 7 ही तो वीडियो हैं, एक बार में बैठ के देख लूंगा मैं तो। बट व्हाट हैपेंस इज, वो 7 वीडियो का मतलब 7 हफ्ते का काम आपसे रह गया है, राइट? तो बिकॉज संडे लाइव इन एंड ऑफ इटसेल्फ उतने काम का नहीं है, जब तक आप उसको फाउंडेशन के साथ इंटीग्रेट ना करें, राइट? तो वो करना ज्यादा जरूरी होगा। Started preparing for the optional today onwards. How can you use this module to complement complete my optional preparation? तो once again, जो आपका फाउंडेशन का लेक्चर्स है ना यूट्यूब पर, उसके साथ इंटीग्रेट करके इसको देखना है। कल का दिन आने दीजिए, बाय 10 p.m. सॉरी 12 p.m. tomorrow you are going to get the coming week's agenda. Over there I'll be telling you clearly, you have to watch from video number 1 to let us say video number 7 or video number 8, and then जो रेलेवेंट पोर्शन कवर हो रहे हैं पहले उसके हैंडआउट्स को आप पढ़ेंगे, फिर वो वीडियोस देखते देखते अगर आपको अपने हैंडआउट्स में कुछ नोट्स स्क्रिबल करने हैं वो करोगे, कुछ चीजें अंडरलाइन करनी है तो वो करोगे, कुछ अगर अलग से डिक्टेशन दिया है जो कि आपके हैंडआउट्स में नहीं प्रेजेंट है तो आप उसको अलग से वहां पे लिख भी लोगे। एंड देन यू कम टू द क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या है आप उनको आंसर करने की कोशिश करोगे। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। क्लियर है? या तो क्वेश्चन पूछा है, सर यू आर डिक्टेटिंग नोट्स ऑन फाउंडेशन लेक्चर्स, आर दे सेम एज फाउंडेशनल नोट्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग? तो ओवर हियर ना व्हाट वी हैव डन इज दैट नाउ जो नोट्स का रिवीजन हो रहा है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स वाज टू डू अवे विद द नीड ऑफ टेकिंग हैंड रिटन नोट्स, राइट? तो यू कैन सिंपली स्किप ओवर द डिक्टेशन पार्ट, लेकिन दिस वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। जो पहले के 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि सोर्सेस से लेकर के कैलकुलेटिव तक, वो वाले नोट्स तो अपडेट हो गए हैं। उसके बाद वाला काम जो है दैट इज स्टिल ऑनगोइंग। तो नेक्स्ट नोट्स दैट वी आर गोइंग टू अपडेट इज वैदिक सिविलाइजेशन। वो भी आज या कल में हो जाना चाहिए, बट वैदिक सिविलाइजेशन तक तो हम वैसे भी पहले हफ्ते में नहीं पहुंचने वाले हैं। तो पहले हफ्ते में वही स्टोन एज सोर्सेज ये सब कवर करना है, तो आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। जो डिक्टेशन वाला पार्ट है ना एक्टिवली, उसको आप चाहो तो स्किप ओवर कर सकते हो या 2x पे करके देख सकते हो, उसको आगे बढ़ सकते हो। Then Ankita is asking, sir, you said that after some time test writing has to be done along with active revision of syllabus. Can you please elaborate a little bit on that strategy? So what is going to happen na, that once you finish ancient India, ये 6 या 7 वीक्स का है शायद, इसके बाद आपका एक सेक्शनल टेस्ट होगा। ठीक है, take 1 week, revise the entire syllabus of ancient India,
and take the test after that. वो evaluate होकर के आपको मिल जाएगा. Ancient खत्म हो गया आपका. Then medieval India. This also I think goes on for some 7-8 weeks or something like that. Right? After that, another sectional test. Right? Now, ये दोनों मिलके हो गए पेपर 1. राइट? आपने 2 सेक्शनल टेस्ट ऑलरेडी लिख लिए हैं. इसके बाद मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगा. मॉडर्न इंडिया कवर करते के साथ साथ आपको 1 हफ्ता लेकर के यू हैव टू टेक 1 वीक and you have to revise the entire paper, because by this point of time it would have been almost 3 months since you watched the first video of ancient India, right? तो एक बार उसको रिवाइज करना जरूरी हो जाता है. Once you have revised from ancient up to medieval the entire paper 1, take a full length test. ठीक है? In the meanwhile, complete modern India, take a sectional test. Complete medieval India, take a sectional test. Then paper 2 के लिए भी एक full length test. So total number of tests that you have written by the time you have completed your syllabus: 1, 2, 3, 4 sectional tests and 2 full length tests. ठीक है? यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं हुई है. After this also, on your own, you will be required to revise these things again and again periodically so that they do not become alien to you. And whenever you do a single revision, that suppose you revise ancient India, you must prepare a test. You have the compilation of PYQs. By this point of time, you must have a good idea कि कौन सी तरह के questions आज के time पे आ रहे हैं. तो pick out those questions and write a test. Test yourself against time. ठीक है? तो give yourself 3 hours, 5 questions आपको पूरे लिखने हैं, वो पूरा करिए. If you are doing the whole of paper 1, तो एक full length test अपने लिए prepare करिए इस तरह से. Right? So what we are going to do now, we have integrated a partial sectional test series with this Sunday Live program also. So sectional tests we have incorporated along with your schedule, but ये जो full length tests है ना, ये हमारे पास करवाने का इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज उसको रिवाइज करने के लिए भी आपको 1 हफ्ते का टाइम होता है, बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तो फॉर दैट होगा क्या कि जब आपका एक बार प्री का प्रिपरेशन हो जाएगा मेंस में, तो वहां पे एक फ्रेश टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो, यू कैन डू दैट ओवर हियर, और इफ यू वांट टू इलेक्ट टू ज्वाइन सम अदर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स, वहां पे आप दूसरी जगह पे ज्वाइन कर सकते हो. तो क्योंकि आपको फिर बाय द टाइम यू कम टू February March, प्री के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट वगैरह उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो फोकस भी शिफ्ट हो जाता है. तो दैट इज वाई कूल डाउन and then pick up once again after the pre. ठीक है? इस तरह से चलेगा. I hope that is clear, Ankita. All right. Anything else? नहीं? चलिए then. Thank you for your time. Look out for the weekly agenda tomorrow by 12 p.m. It will be uploaded soon. Will it also be helpful in 2027? Obviously, it is going to be helpful in 2027. These are things that if you learn once, it is very difficult to unlearn. But yes, you have to keep up with the practice of answer writing. It is like any other skill. If you don't keep on continuously polishing it, it is going to become dull. Okay? You're going to ultimately lose it as well. So by the time that you end your preparation, end your Sunday Live course, you are going to realize that the earlier variety of answers that you are writing ना, कि अगर आप खुद को ही evaluate करते तो जिसने लिखा था उसको मार पीट देते right, कि क्या लिख के आया हुआ है. But once again, कि अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वो भी आपको छोड़ के चले जाएगा. So that is going to happen. So you need to keep in touch with it. Clear है? चलिए then. Thank you for your time, guys. I'll be seeing you next week.